Welcome, students. In this video, we will be discussing all important questions which might be asked in your AWP subjects for Unit 1. So let's see one by one what are the important questions which are been there in the Unit 1 of Semester 5. So starting from the first question, already this question bank has been uploaded in Telegram channel. So I expect that you will be going to view that question bank from the Telegram channel, and please subscribe the YouTube channel also so that you can get notified with all the important questions. Now the first question is quite important. What is the .NET framework? Acha, please class, when you're writing the theory answer, please see to it that you'll be having introduction part, then you'll be having the main content, and then you will be having the conclusion. The first question is quite important. That is about the .NET framework. You need to draw the diagram. You are not in a drawing exam, but at least the basic part has to be clear that these are various languages are there. CLR need to be specified. Web application Windows form need to be specified, as well as ADO.NET XML and base class libraries, etc. But this is a quite important question. This might be asked that explain what is exactly a .NET framework and architecture of it. The next question about the CLR, Common Language Runtime. I will be conducting one YouTube live session also, might be on this coming Sunday or maybe the next Sunday, where I will be going to answer all the doubts of you all. So you will be able to get the detailed knowledge about it. CLR is the important question. That is the Common Language Runtime. You know that CTS stands for ODI Common Type System. CLS stands for ODI Common Language Specification. MSIL stands for ODI Microsoft Intermediate Language, and so on. इसके ऊपर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द और डिस्क्राइब द फॉलोइंग टर्म्स. उसमें CTS आ सकता है, MSIL आ सकता है, CLS आ सकता है, CLR भी आ सकता है. तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ओनली दिस आंसर इज बीन रिटन. अबाउट अ नेम स्पेस एंड इंपॉर्टेंट नेम स्पेस लाइक सिस्टम नेम स्पेस, उसके बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा. ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है. एक बार तो सब कुछ पढ़ ही लो. But then I will just update, because you can find out there are many pages which are there in this particular note. But ये 39 pages are there. Unit 1 सबसे बड़ा है, तो सब कुछ हम लोग कवर करते बैठेंगे, बहुत टाइम चला जाएगा. आपको कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैं बताते जाता हूँ. Different data types in C#, primitive, non-primitive, according to me, this is not something which is quite an important question. This is a quite important question, that is explain implicit and explicit conversion of data types along with the example. So according to me, this is quite an important question. The next question which I find, that is boxing and unboxing, that is conversion of value type into reference type and reference type back to the value type, is also another important question. You need to focus on this particular question. Okay, list and explain the comparison and logical operator in C#. I don't think so that ये question बहुत ज़्यादा important है. ये तो अपना जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ही है, लाइक इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट, एंड सो ऑन. लॉजिकल ऑपरेटर्स है. फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट लाइक इफ स्टेटमेंट, स्विच केस, कंटिन्यू, ब्रेक. ये भी मेरे हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बिकॉज हम लोगों ने बहुत बार प्रोग्रामिंग किया हुआ है, तो देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट दीज ऑल क्वेश्चंस. बट ये क्वेश्चंस नॉर्मली नहीं पूछे जा सकते हैं. थियोरी में इसमें ज्यादा आंसर लिखना मुश्किल हो जाता है. This is quite important question, that is what is exactly the form of switch statement. ये question कुछ अलग वे से पूछा जाता है. What is the fall through in C#? अगर fall through in C# पूछा गया तो समझ लेने का, it is nothing but you have to explain the concept of C#. तो यहाँ पे switch case का जो C# का concept है वो आपको explain करना है along with example. For each loop, for loop, I don't think so वो बहुत ज्यादा important है, एक बार देख लेना, but इतना तो कुछ ज्यादा important questions नहीं. दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरेज, और उसमें आपको एलॉबरेट करना पड़ेगा अबाउट वेरिएबल साइज एरे, और आल्सो कॉल्ड एज द जैक्ड एरे. रेफरेंस पैरामीटर, आउट पैरामीटर, दे आर क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है. रेफरेंस एंड आउट का इज मल्टीपल मेन मेथड्स अलाउड इन C#, जस्टिफाई, आई डोंट थिंक सो दिस क्वेश्चन विल बी कंसिडर्ड, तो उसके पीछे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है. स्ट्रक्चर, क्लास, डिफरेंशिएशन, ये भी क्वेश्चन इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं. मैंने पहले ही बताया था यूनिट 1 में 3 टॉपिक है, तो 3 टॉपिक में हर एक टॉपिक के ऊपर 2-2 क्वेश्चंस आएंगे, तो बहुत ज्यादा हर एक टॉपिक को इन डिटेल में प्रिपेयर करते बैठेंगे, सो इट विल कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम ऑफ यूअर्स. तो आपको करना क्या है, वंस एक बार फर्स्ट रीडिंग में सब कुछ रीड कर लो, और उसके बाद में ये वीडियो में बता रहा हूँ वही क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उसी को आपको जरा सा फोकस करना है. Need of enumerator, according to me, is not that important question. Inheritance polymorphism is a general concept. I don't think so any kind of questions will be asked
in this particular enumerations and polymorphism. Sealed classes, sealed methods, this is same like a final in what you are Java. तो ये sealed classes, sealed method which are used for restricting inheritance, restricting the method overriding, ये भी पॉइंट जरा देना मुश्किल है. तो इसके ऊपर भी मुझे लगता है कि ज्यादा क्वेश्चन आ सकता है. हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है, what are the constructors in C sharp and explain in details about different types of constructor. तो various types of constructor in C sharp, ये पॉइंट आपका कंसिडर हो सकता है, लेकिन प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर, इसके ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान दो, बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चन होने का चांसेस जरा सा है. हाँ, दिस इज ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज explain multiple inheritance and how it has been achieved by using the interfaces. So please follow this particular question answer also. Prepare this question nicely. Explicit interface, there is no need to prepare too much about it. एक बार read कर लेना. Similarity between interface and abstract classes, मेरे हिसाब से इसके ऊपर बहुत ज्यादा नहीं आएगा. Interface का एक क्वेश्चन कर लिया, more than sufficient for you. मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग, तो बेस्ट ऑफ माय नॉलेज इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आने वाले नहीं है, बिकॉज ये अपने जनरल क्वेश्चंस है जो हम लोग पहले जावा में भी पढ़े थे, वही कंसेप्ट हम लोग सी प्लस प्लस में पढ़े हैं, वही सेम कंसेप्ट आने वाला है. तो उसके ऊपर बेस्ड ऑन दैट मेनी क्वेश्चंस आर नॉट बीन आस्क्ड, बट ये जो डिफरेंस है एक बार पढ़ लेना, व्हाट इज ओवरलोडिंग एंड व्हाट इज ओवर राइडिंग. सर ये मटेरियल मुझे कहाँ पे मिलेगा? टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, उसको भी सब्सक्राइब करो एंड यू कैन जस्ट गेट दिस मटेरियल ओवर देयर. वैसे ही मैंने हर एक मटेरियल में यूट्यूब का लिंक भी दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है. मेथड हाइडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग, ये दो कंसेप्ट है, बट मेथड हाइडिंग के ऊपर इतना फोकस करने की जरूरत नहीं. मैं जिसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है उसको 2 टाइम्स रीड करना है, और जिसके ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं बोल रहा है, इसका मतलब उसको स्किप नहीं करना है, एक बार रीड कर लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट. डिफरेंस बिटवीन ओवरराइडिंग, हाइडिंग, तो एक काम करो, ओवरराइडिंग एंड हाइडिंग ये सेपरेट क्वेश्चन करने की जगह पे ये एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना, दैट इज डिफरेंस बिटवीन ओवरराइडिंग मेथड्स एंड मेथड हाइडिंग. तो अपना प्रिपरेशन दोनों क्वेश्चंस का हो जाए. ये देखो डिस्क्राइब टर्म जैसा क्वेश्चन आता है, लाइक डिराइव्ड क्लासेस, स्टैटिक क्लासेस, सील्ड क्लासेस, पार्शियल क्लासेस. अकॉर्डिंग टू मी इसमें क्वेश्चन आने का चांसेस है अबाउट व्हाट इज एमएसआईएल, व्हाट इज सीटीएस. तो ये डिराइव्ड क्लासेस वाला कंसेप्ट के ऊपर डिफाइंड टर्म्स में क्वेश्चंस कंपैरेटिवली कम आने का चांसेस है. ये क्वेश्चन क्वाइट इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज एग्जैक्टली यू मीन बाय असेंबली and how to work with assembly. और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, इट इज गार्बेज कलेक्शन एंड हाउ द गार्बेज कलेक्शन हैपेंस इन सी शार्प. सो प्लीज असेंबली का ऊपर का क्वेश्चन करो, बिकॉज थियरी आंसर है. तो यू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड प्राइवेट असेंबली एज वेल एज व्हाट योर पब्लिक असेंबली एंड हाउ द गार्बेज कलेक्टर वर्क्स. सो दीज आर व्हाट क्वाइट इंपॉर्टेंट पार्ट्स इनटू इट. नेम स्पेस का क्वेश्चन पहले ही कर दिया था, वही नेम स्पेस का क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे एक्सटेंड किया हुआ है क्वेश्चन बैंक में, about what is the namespace and explain the system namespace and various other classes which are present inside what your system namespace. उसके साथ में कुछ 5 namespaces का कुछ नाम याद रखो, like system.collection, system.text, system.data. So these are what few namespaces you try to recollect the name of it. ये index value pair, ठीक है. एरलिस्ट एक क्वेश्चन कर लेना, बिकॉज एरलिस्ट के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस जरा सा रहता है. सो यही लगता है मुझे. जेनरिक क्लासेस आपको उसके ऊपर क्वेश्चन आने का चांसेस जरा सा कम है. प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन आने का चांसेस ज्यादा है, दैट इज व्हाट इज द प्रॉपर्टी एंड व्हाट आर द वेज बाय व्हिच द प्रॉपर्टीज आर बीन डिक्लेयर्ड. डेलीगेट्स इज ए इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चन आने का चांसेस ज्यादा है. सो प्लीज फॉलो द डेलीगेट पॉइंट्स इन डिटेल and as well as you try to follow the concept of garbage collector. तो ये क्वेश्चंस मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है. सबके पॉइंट वाइज आंसर दिए हुए मैंने, आपको आपके लैंग्वेज में वो आंसर्स को इलॉबरेट करना है. प्लीज रिमेंबर दैट, कभी भी आंसर लिखोगे तो पहला इंट्रोडक्शन आएगा, फिर बाद में मेन कंटेंट आएगा, उसके बाद में फिर आपका आएगा दैट इज कॉल्ड द कंक्लूजन पार्ट. 5 मार्क्स का क्वेश्चन है. अगर आपके लैंग्वेज में बोला जाए तो लेंथ के हिसाब से देखोगे 1.5 पेज to 2 पेज का आंसर होना ही चाहिए. 1.5 पेज to 2 पेज मतलब फर्स्ट पेज हो गया, सेकंड पेज हो गया, राइट. ये 2 पेजेस अपने होने चाहिए. इट इज नॉट 4 पेजेस, इट इज बैक टू बैक का 2 पेजेस का कंटेंट अपना लिख के होना चाहिए. एटलीस्ट 1.5 पेज तो होना चाहिए. तो फिर लेंथ के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि यू विल बी ऑलवेज प्रेजेंटिंग योर मटेरियल इन सच अ वे दैट पेपर चेकर शुड फाइंड इट इजी टू रीड योर मटेरियल. पॉइंट वाइज तो होना चाहिए, पॉइंट के नीचे अंडरलाइन होना चाहिए, साथ साथ में आपका चार्ट्स भी प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए. So these are the important questions which I found from Unit 1.
So all the best for your AWP exam. In next video, I will be discussing about Unit 2. So please be tuned with us. Thanks a lot.